Hello, good evening, my dear students and my friends. Myself, CSIR, IIT GATE, CSIR NET, AIR 40. You are most welcome in our channel Chemical Group. Dear students, we are providing here complete physics, chemistry, mathematics, and the biology for class 9 to 12 CBSE board in this channel, and also chemistry for B.sc, M.sc, NEET, IIT GEM, IIT GATE, TIFR, GEOSCIENTIST, NEET, and CSIR NET, GRF, etc. So let's start. Today we are going to start chemistry for class 11th CBSE board. So today we are take chapter number first, some basic concepts of chemistry, class 11th chapter 1, class 11th chapter 1, some basic concepts of chemistry, some basic concept of chemistry, concepts of chemistry. Okay, so dear friends, from today, today is 3rd June 2020. We will upload a video, one video for class 11th daily. So you can watch this video and you can prepare your notes for your class. So now let's start. First of all, we will explain you what is chemistry. So the question is that what is chemistry? And so the first point is chemistry. Dear students, before studying the chemistry and the parts of chemistry, you first of all, you must know, you really analyze the chemistry. What is chemistry? क्या है chemistry? So dear students, in actually chemistry is the science of atoms and the molecules and their transformations from one state to another state, from one form to another form, in which we study the composition, structure, and the properties of matter. It is called the chemistry. Listen once again. Chemistry is the science of atoms and the molecules and their transformations, in which we study the composition, properties, composition, structure, and the properties of matter. So you can also write this definition. What is chemistry? Chemistry is the science of atoms. Chemistry is the science of atoms. Chemistry is the science of atoms and molecules and their transformation in which we study the composition, structure and properties of matter, So this is a good and the exact definition of the chemistry. Clear? Means chemistry एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है. केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री में करते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीटली एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है. एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई मॉलिक्यूल आपने लिया है तो उस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है,
कौन कौन से एटम से मिलकर के बना हुआ है, ये सारी चीजों की स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में। अगर आप हायर लेवल पर आएंगे, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की हम की सैंपलिंग करते हैं तो उसका हम एनएमआर स्ट्रक्चर देते हैं। उसके एनएमआर से सारी उसकी जो पीक वैल्यूज आती हैं उनके द्वारा पता चलता है कि इसका जो प्रोटॉन एनएमआर लेते हैं, C13 एनएमआर लेते हैं, तो वहां से पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स जो है क्या है, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, इसकी पीक वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर, सारी डेफिनेशन, सारी जो कंपोजिशंस है उसके बारे में क्या बताती है, हमें केमिस्ट्री ही बताती है। किसी भी चीज की अगर हम जो है जानकारी अगर करनी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है, दैट इज केमिस्ट्री। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दे सकता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, इसके थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री की स्टडी करते क्यों हैं? Why we study the chemistry? We study chemistry because it has a great importance in our life. So what is its importance? Chemistry has a lot of importance, lot of applications in our daily life. So we are discussing only some applications. Applications of chemistry, or we can say importance of chemistry. Importance of chemistry. Or applications, okay? Importance or applications of chemistry. Applications of chemistry. Number first, in simply we can say in chemical industries, okay? In chemical industries. In chemical industries, we study the chemistry. In chemical industries, we study the chemistry. Why we study chemistry? For the manufacturing of, for manufacturing of fertilizers, manufacturing of chemicals, manufacturing of acids, bases, alkalis, soaps, detergents, these all are made from the chemistry. So manufacturing of fertilizers, comma, alkalis, comma, bases, acids, soaps, detergents, alloys. So there are a lot of applications. They are manufacturing of many of substances in chemical industries. Next, as a life-saving drugs, like cisplatin and taxol. These are the two chemical drugs. Okay, so these are used in a cancer therapy. That is, they are used in the treatment of cancer. AZT. What is AZT? Azithromycin. Azithromycin used in AIDS victims. That is the treatment of the AIDS. So they are the only some applications, but the chemistry has a lot of applications in daily life. Now, so we are going some more further, and so these are the simple importance and the definition of the chemistry.
Now let's start the topic of chapter number first. First of all, classification of matter. We are going to discuss the classification of matter. Classification of matter. You know, actually matter classified in two broad categories on the basis of two broad concepts. Number first is on the macroscopic level and next one is microscopic level. मैटर को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल, सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है और माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, दोनों को एक एक करके समझते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल. That is a very large level, a large scale, macroscopic level. Or simply we can also say that this is a bulk level or we can also say chemical classification. This is chemical classification. So all are the same things. Either you can say the classification of matter on the basis of macroscopic level, on the basis of bulk level, or simply chemical classification. So chemically, matter is classified in two categories. Matter classified in two categories, that is mixture and pure substances. Mixture and second is pure substances. So one by one we discuss the mixture and the pure substance. What is mixture? Means a substance which is made up of two or more kinds of matter in any proportion or in any ratio. When two or more substances are mixed together in any ratio, they form a mixture. For example, we mix the NaCl with flour, NaCl with sugar, sand and water, okay, iron flings and sulfur powder. So you can make a lot of examples of the mixture. Means mixing of two or more substances in any ratio is called mixture. And mixture further classified in two categories, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So let's we see one by one. First of all, we write the definition of mixture. When two or more substances are mixed together, when two or more substances are mixed together, when two or more substances are mixed together, they form a mixture. And mixture are of two types. Number first one is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and next one is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. So we are discussing one by one. First of all, we take the homogeneous mixture. Homogeneous mixture, we are at some properties of homogeneous mixture. Means number first, composition is uniform throughout the mixture. Composition is uniform throughout the mixture. Composition is uniform throughout the mixture. Composition is uniform throughout the mixture means components of the mixture mixed completely with each other
So this is the first property of the homogeneous mixture. And second one is there is no visible boundary between the components. There is no visible boundary. There is no visible boundary between components. There is no visible boundary between components. And next, third point, components cannot be separated by simple physical methods. Components cannot be separated. Components cannot be separated by simple physical method. By simple physical method like hand picking, gravitational separation, crystallization, etc. So components cannot be separated by the simple physical methods. And what are the example of this homogeneous mixture? Let's take some example of the homogeneous mixture. Sodium chloride in water, NaCl in water, homogeneous mixture. Okay. Sugar in water, homogeneous mixture. And so there are some more examples. Glucose in water, homogeneous mixture. So there are many examples. Sugar solution, salt solution, solution of acetic acid and the water, homogeneous mixture. So these are the homogeneous mixture. Now you first of all you take the screenshot of this homogeneous mixtures. Next we are going to discuss the heterogeneous mixture. So here we are write the heterogeneous mixture, and we made some change in this definition. Heterogeneous mixture. So in the heterogeneous mixture, composition is not uniform throughout the mixture. Okay, composition is not, यहाँ पर आप केवल not लगा देंगे. Understand? Composition is not uniform throughout the mixture. There is no visible boundary between the there is a visible boundary between the components. Components can be separated. यहाँ पर not हटा देंगे, इसका just opposite कर देंगे बस. Components can be separated by simple physical methods like hand picking, gravitational separation, crystallization, and next one is magnetic separation also. Magnetic separation, etc. And for examples of this heterogeneous mixture, iron fillings and sulfur powder, small pieces of stone in pulses, sand in water. So there are many examples of the heterogeneous mixture. Okay, so let's take this example. स्मॉल पीस ऑफ स्टोन मीन्स छोटे छोटे स्टोन्स हैं, वो अगर पल्सेस के अंदर है, दाल के अंदर है, पल्सेस मीन्स दाल होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि स्टोन का पार्टिकल मुझे अलग दिखाई देगा और पल्स के जो पार्टिकल्स होंगे, पल्सेस के जो दाने हैं वो अलग होंगे. तो उनको हम देख सकते हैं. वी कैन सी देम, मीन्स वी कैन सेपरेट देम, एंड वी कैन pick
them by simply hand picking method। हाथ से उसको मैं उठा उठा के अलग कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट पॉइंट हमने लिखवाया है कि वी कैन सेपरेट बाय द सिंपल फिजिकल मेथड लाइक द हैंड पिकिंग। इससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और देयर इज विजिबल बाउंड्री मींस हम उनको सेपरेटली देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें विजिबल बाउंड्री है। और क्या है, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, और वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। मींस कहीं पर स्टोन के पार्टिकल कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर कुछ कम भी हो सकते हैं। और हमने बताया कि इसमें जैसे हमने होमोजेनियस बताया था कि कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। कंपोजिशन यूनिफॉर्म मींस क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे हमने कहा यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ बता देता हूँ। सपोज दैट आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर को डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व कैसे कर दिया, मान लो आपने एक प्लेट ले ली, प्लेट में डिजोल्व कर दिया सॉल्यूशन को। आपने क्या किया, बढ़िया से सॉल्यूशन बना दिया। टेस्ट उसका करना, एक तरफ से टेस्ट किया, आपको स्वीट लगा टेस्ट, दूसरे से टेस्ट किया तो कैसा लगेगा, स्वीट लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, या सेम टेस्ट लगेगा, सेम टेस्ट लगेगा। अंडरस्टैंड, कहीं से भी आप देखेंगे, चाहे उधर से उठाएंगे, इधर से लेंगे स्पून से, ऑल एवरी पॉइंट वी गेट द सेम टेस्ट, दैट इज द शुगर डिजॉल्व्ड यूनिफॉर्मली इन द वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए आज का क्लास यहीं पर फिनिश करता हूँ। और बने रहिए मेरे चैनल पर साथ, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।